Hello everyone and welcome back to Balajee online classes. Today I Fezia Khidwai is here to illustrate chapter number 6 Industries of class 8 Geography. So what do you understand by the term industry? The term industry actually denotes the productive activity in any sphere of the life. Understand? And what and actually industry mean? Industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services. And based on the size, industries are of three types. First is your cottage industry. Cottage industry is basically a kind of household manufacturing unit, and it employs people in small family setups using basically the ordinary tools. They used ordinary tools in processing the raw materials and making the products. It basically adds value to the primary products. The main articles that are made in the cottage industries are the baskets, potteries, handlooms, ropes, shoes, fishnets, etc. Then the second is the small scale industry. Small scale industry basically requires skilled labor and small machines. They need small machines basically that run with the help of the power. And the products that are manufactured in these industries are the electronic goods, brasswares, utensils, furniture, textile goods, perfume, leather products, etc. Then we have the large scale industry. Now, these industries run with the help of large machines, a large workforce, and a large amount of capital. These industries usually make primary products which are used by the other industries like iron and steel, cement, oil, chemical, aircraft, shipbuilding industries are some example of large scale industries. Then based on the ownership, industries are classified into three categories again. First is the public sector. Such industries are owned by the government or its agencies. These industries which are owned by the government are called as public sector industries. For example, we have Bharat Heavy Electricals, Steel Authority of India, etc. Second is the private सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? वो इंडस्ट्रीज जो ज्वाइंटली ओन की जाए थ्रू इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. और उनमें जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो जो भी उसके ओनर होते हैं दैट ओनली बियर्स द लॉस ऑल्सो एंड एंजॉयज द प्रॉफिट ऑल्सो. देन फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज, Tata Iron and Steel Industry are some examples of private sector industries. Then we have the joint sector. This kind of enterprises are jointly owned by the government also and also the private individuals, right? And they together pool up their resources and work is done. For example, we have Maruti Udyog Limited, Oil India Limited are some examples of jointly owned enterprises. Then based on the raw materials, again industries are classified into four categories. फर्स्ट इज योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर साइड से आता है, राइट? ऑल सच इंडस्ट्रीज दैट डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर और इन विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल sugar, oil, cotton, jute and textile industries. Then we have the mineral based industries. These industries which derive their raw material through basically mining. For example, we have iron and steel, aluminum and copper industries. Then we have the pastoral based industries. Such industries that derive their that derive their raw materials from animals or animal produce, that are called as pastoral based industries. For example, we have leather good industry and dairy products industries. Then we have the last one, that is the forest based industry. Now वो industries जो अपना raw material forest से derive करती हैं, right? या फिर कोई भी forest का जो भी product है वो use होता है in processing the final product, that are called as forest based industries. For example, we have furniture industry, paper industry, etc. Then what factors affect the location of the industries? Now we are going to discuss that.
फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, कहाँ इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए जहां से इजिली आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। ये बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, राइट। Steel plants are located near iron ore and coal mines. Similarly, sugar industry is located near sugar producing area. Then we have the second point, that is the labor. Industries require both skilled and unskilled labor. Like दोनों टाइप के लेबर्स इंडस्ट्री को रिक्वायर होते हैं। अनस्किल्ड लेबर्स तो उन्हें इजिली मिल जाते हैं, बट स्किल्ड लेबर्स मोस्टली क्या होता है, उनको ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंडस्ट्रीज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में अगर लोकेटेड हैं तो वहां से दे कैन इजिली गेट दी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, बट स्किल्ड लेबर मोस्टली कहां से आते हैं, मोस्टली आउटसाइड एरिया से स्किल्ड लेबर्स सर्च आउट किए जाते हैं। देन वी हैव दी पावर। इट इज अ क्रिटिकल इनपुट इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज बेसिकली रन किस पे करती हैं, पावर पे करती है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने में, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली वाटर पावर से रन करती हैं, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड होती है, वो वाटर पावर स्टेशन के पास लोकेटेड होती है, राइट। देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट। Now, location of industry becomes difficult in areas where transport facilities are not very well developed, right? Therefore, industrialization requires raw materials to be taken to the site of production and also the products that are taken to the market for the sale. तो ये दोनों साइड आपका ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक तो रॉ मटेरियल लाने में और दूसरा जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको मार्केट तक पहुंचाने में। तो इन दोनों में आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी लोकेशन को, हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करता है। देन वी हैव द कैपिटल। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। इट इज नीडेड टू परचेज लैंड, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, सेटिंग अप मशीन्स एंड ऑल्सो टू पे द लेबर, राइट। So industries are usually located in those parts where there is an easily availability of the capital. Then we have the last factor, that is the market. Now market is something that is must for growth and development of industries. Market वो चीज है जो भी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस बनाती है वो सेल मार्केट में करती है, राइट। तो मार्केट जो है वो बहुत ही एक मस्ट फैक्टर है इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। एक वेल डेवलप्ड मार्केट। तो बेसिकली अ गुड मार्केट शुड बी एक्सेसिबल टू द कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो टू द इंडस्ट्री। उसकी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो मार्केट है वो इंडस्ट्रीज को भी इजिली एक्सेसिबल हो एज वेल एज द कंज्यूमर्स। For example, we have cotton cloth that has a larger presence in the markets of hotter climates, whereas woolen do well in the markets of the cold areas, right? Then we are going to discuss some of the major industries, जिसमें first है आपकी iron and steel industry. Iron and steel industry is a basic industry, right? It forms the backbone of industrialization of any country because without steel, no industry can develop. The raw materials that needed for iron and steel industry are iron ore, coal, limestone, manganese, and a large volume of water. Also, Russia जो है that is the largest producer of iron and steel in the world. इंडिया में जो मेन स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं दैट आर दी जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिल्लई, सलेम, विशाखापट्टनम एंड रूरकेला. देन वी हैव द केमिकल इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो अ बेसिक इंडस्ट्री. व्हाई? बिकॉज जो भी प्रोड्यूस वो करती है दैट आर वाइटल फॉर दी अदर इंडस्ट्रीज, जो अदर इंडस्ट्रीज में आगे चल के प्रोसेस होता है, राइट. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, वेजिटेबल ऑयल, स्पाइसेस, अल्कोहल एंड मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सल्फर, पोटाश etc. are the raw materials to these industries. Then USA has the largest chemical industry and India is also one of the major producers of chemicals and drugs which it export to other developing countries. Then we have the cotton and textile industry. Cotton and textile industry largest employer है वर्कफोर्स की इंडिया में, जिसमें सबसे ज्यादा वर्कफोर्स आपकी पाई जाती है जिस इंडस्ट्री में, उसे हम कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स हैव अ वर्ल्ड वाइड डिमांड, जिनकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो पूरी दुनिया में है. As raw cotton is the raw material, the cotton textile industry is generally located close to cotton growing region, right? Another essential requirement for the growing of cotton is the humid climate. Humid climate की भी requirement होती है, right?
देन जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं आपके कॉटन टेक्सटाइल के, दैट आर दी मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई एंड Coimbatore are the main centers. Then we have the jute industry. It produces jute goods which are needed by industrial nations for packing the material, right? और इंडिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है जूट का, एंड ऑल जितनी भी जूट इंडस्ट्रीज हैं दैट आर लोकेटेड अराउंड हुगली बेसिन इन वेस्ट बंगाल। हुगली बेसिन के अराउंड वेस्ट बंगाल में मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो जूट की दैट आर लोकेटेड। देन वी हैव द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री. Railway equipment industry is largely developed in Europe and North America. The industry manufactures locomotives powered with steam, diesel or electricity and rolling stocks which include coaches, wagons, oil tankers etc. जो इंडिया में हमारे लोकोमोटिव्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं बेसिकली आपके जमशेदपुर, वाराणसी एक्सेट्रा, जहाँ पे रेलवे कोचेस बिल्ड होते हैं। वो कौन सी जगह होती है? वो दो जगह हैं, दैट आर दी पेराम्बुर एंड कपूरथला. देन वी हैव द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री. It requires skillful laborers and high level of engineering skills, क्योंकि ये हमारा basically aircraft industry है, aircraft products manufacture हो रहे हैं, right? A huge amount of capital is spent on the research work, also on design testing and on the constant modification and improvisation of the techniques. यूएसए जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है एयरक्राफ्ट्स का इन दी होल वर्ल्ड. इंडिया में जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है दैट इज बेसिकली लोकेटेड एट कानपुर, लखनऊ, बैंगलोर, नासिक एंड कोरापुट. Then we have the last industry, that is the automobile industry. This industry is basically located where cheap and skilled labor is in abundance. जहाँ पे आपको cheap और skilled labor बहुत ही आराम से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर में मिल जाए, वहाँ पर बेसिकली ये इंडस्ट्री लोकेटेड होती है, जहाँ पे पावर सप्लाई बहुत आसानी से मिल जाए और जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड अच्छी हो. The world's major car producers are USA, Japan, Germany and France. Also, Paris, Moscow, Tokyo and Sydney are also some major important car making centers. So class, your topic ends here, your chapter completes here. Now it is your responsibility to read this chapter, mark all the difficult words and learn them. Also, you can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.